सभी को नमस्कार। एक छोटा सा इंसिडेंस मैं बताना चाहूँगा। अभी रिसेंटली हुआ है ये चीज़ कि एक पापा और उनका बेटी जा रहे थे और रास्ते में उनका एक कुत्ता आ जाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो बाइक जो है ना कुत्ते के ऊपर गिर जाता है और कुत्ता को भी ब्लड निकलता है और दोनों बाप बेटी वो भी गिर जाते हैं। तो उनके साथ जो लगेज भी रहता है और लगेज के कारण ज़्यादा हार्म नहीं होता है, ज़्यादा इंजूर नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे मैं साइड में था, रास्ते के साइड में, तो मैं उनको उठाने गया और उठा दिया। और उनके जो बाइक चला रहे थे, जो लड़की के पिता, उनको मैं इंजर्ड हुआ तो उनको बैंडेज वगैरह लेके आया और बैंडेज दिया और वो बैंडेज मैंने चिपका दिया। ब्लड थोड़ा निकल रहा था। तो और उनके जो बेटी का उनको कभी वो थोड़ा इंजर्ड हो गया था, हाथ में गिर गए तो उनको भी बैंडेज लगा दिया मैं। कहने का तात्पर्य ये है, और एक मैं बात बताना चाहूँगा कि बाद में वो मुझे दोनों नमस्कार किए। मैं बोला कि ये प्रभु का कृपा है कि इतना हुआ। वो भगवान हैं, आपको सलामत रखें। और आगे जो जा रहे हैं वो, ठीक है, वो भवानीपटना जा रहे थे, तो आप आगे जा रहे हैं थोड़ा देख के जाइए, क्योंकि ये मतलब एक छोटा सा सिम्टम्स है, आगे और भी कुछ हो सकता है, इसीलिए आप सेफली जाइए, मैं बोला उनको। तो दोनों ने बाप बेटी उन्होंने मुझे नमस्कार किए और मुझे बहुत खुशी लगा कि हाँ चलो हम किसी का काम तो आए। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी, या फिर कहने का तात्पर्य ये है कि इंसान है, इंसान का काम आना चाहिए। धन्यवाद। Disasters and crises have a direct impact on people's lives. They may lose their homes, they may be displaced, lose their jobs, their livelihoods, and animals. They need clean water, food, shelter. Some may get sick or injured. Schools may be destroyed, families separated, and markets disrupted. During crises, people have the right to protection and assistance. They have the right to life with dignity. Humanitarian standards translate these rights into concrete actions to support girls and boys, women and men, whatever their age or ability. People responding to crises can use these standards to identify needs and decide what to do. Affected people can refer to them to understand their rights. 20 years ago, Sphere developed minimum standards in 4 life-saving sectors: water, food, shelter, and health. Over time, more standards have been developed following Sphere's approach and built on the same foundations. These standards cover education, livestock, economic recovery, child protection, market analysis, and inclusion of older people and people with disabilities. But people don't live their lives in sectors. So to support them in the best possible way and to encourage collaboration, coordination, and learning across sectors, we have created the Humanitarian Standards Partnership. All standards are grounded in the Humanitarian Charter and supported by the protection principles and the core humanitarian standard. Once you understand the approach and logic of one handbook, you will know how to use them all, in any context. To develop and revise these standards, thousands of people around the world contribute their knowledge, experience, and expertise. You can use humanitarian standards in many different ways. For example, to understand needs and jointly prioritize actions. To work with governments, communities, and partners
to design, implement, and improve a response, to measure how effective a program is, and take steps to leave no one behind, or to prepare before crisis strikes. You can easily access these standards in many different languages and formats: PDF, online, hard copies, and as an app. They are free and available for everyone. Today's humanitarian crises are more frequent, touching the lives of more people for longer periods. Humanitarian standards help you bring order out of chaos and focus where assistance is needed most. Life with dignity is everybody's right.